When the term is water, formula for water is H2O. 2:16 is the mass ratio, that is fixed ratio of 1:8. Structure of water you have done in chemical bonding, it is V shape. Hybridization sp3. Bond angle 104.5 degree. V shape or bent geometry. Next point we have is water can form hydrogen bonds. And when we have formation of hydrogen bonds, so each water molecule can form 4 hydrogen bonds at the most. Yani maximum number of hydrogen bonds formed by water molecule is going to be 4 per molecule. So hydrogen bonding is possible. Maximum number of hydrogen bonds formed per molecule is 4. Freezing point 0 degrees Celsius. Boiling point 100 degrees Celsius. Dielectric constant of water is 81. Dielectric constant is 81. As water is polar, with high value of dipole moment, therefore it has tendency to dissolve. Ionic compounds in it. Dielectric constant की बात करें बेटा, dielectric constant is a constant defined in physics with the help of which we can know that with which force a solvent can break the ionic interactions or electrostatic forces. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जब कोई ब्रेक करेगा तो जिस पावर से वो ब्रेक करता है उसे जिस कांस्टेंट से डिफाइन किया जाता है दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, राइट? और more is the dielectric constant, more is the tendency, more is the property, more is the tendency of that solvent to dissolve ionic compounds. Right? समझ आ गया यहाँ तक? Ice floats on the surface of waters. Floats on the surface of water. What is the structure of ice? तो आप कहते हो cage-like structure. Cage-like structure of ice is there. This you have done in your chemical bonding. Density of water is maximum at 4 degrees Celsius. Above and below this temperature, density decreases. Above and below this temperature, density decreases.
That's about the general properties of water. Water molecules are having type of structure, sp3 hybridization, V shape and so on. बेटा ये टॉपिक सारा आप पहले कर चुके हो in your various topics, chemical bonding etc. Done? More is the dielectric constant. More is the tendency to dissolve ionic compounds and break electrostatic forces. अब जब वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो केमिकली यहाँ कह सकते हो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. Metals of group 1 react with water to form metal hydroxide plus hydrogen. When we say metals react with water, it means we are talking about sodium plus water, potassium plus water, rubidium plus water. So water react with group 1 elements and we can complete these reactions. It means water and metal react with each other to form hydroxides and hydrogen gas. तो यहाँ बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन and rubidium hydroxide plus hydrogen. Similarly, you can write reactions for lithium and cesium also. This reaction is going to be a violent reaction, very fast reaction. It is highly exothermic reaction. Delta H for this reaction is negative. As reaction is delta H negative exothermic, but this energy produced, ये जो energy produced हुई, this energy can burn hydrogen and hydrogen will catch fire. तो आप कहोगे ये हाइड्रोजन जो है अगर ऑक्सीजन वहां प्रेजेंट हुआ, हीट मिला तो ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन इज गोइंग टू कैच फायर. तो why sodium is going to catch fire when dissolved, when put in water? The reason is not sodium is catching fire. It is actually hydrogen is catching fire. ठीक है, तो all alkali metals are very reactive to water. In moisture they can catch fire because hydrogen produced is highly combustible. Delta H is negative, therefore ignition can be provided by delta H and oxygen gas is already there in atmosphere. Now metals of group 2. मेटल्स ऑफ ग्रुप 2 सेकेंड ग्रुप की बात करें तो सेकेंड ग्रुप के मेटल्स में आपके पास है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम. These can react with water. Again we get hydroxide plus hydrogen. Complete the reaction with strontium and barium. Same reaction is there. So group 2 is also going to react with water. And this case, water is taken to be cold water because reaction requires very low energy to react. Activation energy is not very high. Here also cold water can work. It means calcium can react with cold water. Same strontium can react with cold water. Barium can react with cold water. The metals of group 2 also react with water to give us hydroxides and hydrogen.
Now, two metals we have not written. One is beryllium, another is magnesium. But a magnesium react with water only in steamed condition. It means in normal conditions this reaction is not possible. The magnesium react with water to give us magnesium hydroxide plus hydrogen. And beryllium is not going to react with water normally. Beryllium पानी से react नहीं कर पाता. Very less tendency to go for reaction. क्या समझ आया इसका मतलब? ग्रुप 2 में reactivity down the group क्या कर रही है? Increase. ठीक है. बेरिलियम बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहा. मैग्नीशियम स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है. कैल्शियम स्ट्रोंशियम कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर रहे हैं. इट मींस रिएक्टिविटी डाउन द ग्रुप इज गोइंग टू इंक्रीज. बोलो जी, सारे पॉइंट समझ आ गए? Iron, aluminium and zinc. These are the three metals. Those are going to react with water only at a very high temperature to give us hydroxides and hydrogen. You can balance these reactions. इनका डेल्टा H कम नेगेटिव होता है. इनका डेल्टा H कम नेगेटिव होता है, इसका कैच नहीं करता है. Delta H negative होता है. All these reactions are exothermic. इसका हाइड्रोजन फायर नहीं कैच करता. कर सकता है. हाइड्रोजन गैस किसी भी बनता है, कैन कैच फायर वेरी इजीली. लेकिन उन रिएक्शन में जिनमें स्टीम डालना पड़ रहा है तो आप हीट इतनी दे दोगे रिएक्शन तो वहां पे भी आग पकड़ लेगा. Now temperature condition required for iron, aluminium to zinc is between 700 to 1000 degrees Celsius. It means now again the water taken should be in a steamed form and still more temperature is required. Right? So these are the reaction of metals with water. The water can react with all metals almost. But in D block, we are having very less reactive nature of metals. It means metals of group 1, group 2 are very reactive. Metals of D block are comparatively less reactive. Done? Next we have water can react with coke also. Coke plus water. It means we are talking about carbon plus water. Water here must be in a steam state. High temperature is required. We get formation of carbon monoxide plus hydrogen. The coke can be reacted with steam to give us carbon monoxide and hydrogen. In all these reactions, have you observed that calcium is oxidized? It means water is acting as oxidizing agent. Clear? यहाँ पे भी बेटा कार्बन 0 से किस में कन्वर्ट हुआ? कार्बन +2 में जा रहा है. It means water is acting as oxidizing agent. The water is either oxidizing metals or it is oxidizing carbon, that is non-metal, leading to the formation of carbon monoxide. Temperature required is again more than 700 degrees Celsius for this reaction, and this combination carbon monoxide plus hydrogen is called synthesis gas or syngas.
Clear? Water can react with OF2, oxygen difluoride. When we see OF2 react with water, we get formation of HF plus oxygen. But HF exists as a dimer, therefore we can write it as H2F2 plus O2. This is dimer of HF. HF हमारे पास dimeric state में exist करता है and its dimer is formed due to, look at कौन सी bonding की वजह से ये dimer बन रहा है? Hydrogen bond. So due to hydrogen bond, HF can exist as a dimer. So OF2 react with water to give us H2F2 plus oxygen gas. In this reaction, oxygen here is plus 2 and later on oxygen is converted to 0. अब इस रिएक्शन में बेटा वाटर क्या एक्ट कर रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट, राइट? यानी आपके पास मेटल वाली रिएक्शंस में वाटर क्या था? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. कार्बन के साथ वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, लेकिन OF2 के साथ वो क्या बन गया? रिड्यूसिंग एजेंट. Water can be added, addition reactions can be conducted with water, and in organic chemistry it is important that water is added to alkenes leading to the formation of alcohol. You have done this reaction in your hydrocarbons. Water can be added in acidic medium to alkenes leading to the formation of alcohol. It is addition of water to unsaturated compounds. Hydrolysis. Water has important tendency to go for hydrolysis reactions. For example, if I have ester and water is added to it, so we get formation of acid plus alcohol. It means water can break ester into acid and alcohol. Hydrolysis means with the addition of water we can break a molecule. So ester can be broken into two parts. One is acid, another is alcohol by using water. This is called hydrolysis. It means overall or in a nutshell we can say that water has large tendencies to react with number of atoms or molecules or compounds, organic or inorganic, leading to so many reactions. Many more reactions are there, लेकिन अभी हम सिर्फ इतना ही टॉपिक कवर अप करेंगे. In general, we can understand that water has tendency to go for large number of reactions. Right? Next point we have is water is amphoteric. When we say it is amphoteric, it means it can accept a proton
and give us H3O positive, and it can give a proton and give us OH negative. As it can act as a donor as well as acceptor of proton, it is amphoteric. The amphoteric nature of water is there. That means water can react with acid as well as base. Example, beta HCl plus water, it means acid is reacting with water. And ammonia react with water, it means water is reacting with a base. HCl plus water, we get H3O positive plus Cl negative, and NH4 positive plus OH negative. These two reactions are indicating that water can react with acid as well as base. For water, Kw, that is ionic product of water, it is H3O positive into OH negative, which is equal to 10 raised to power minus 14 at room temperature. This Kw is called ionic product of water. Kw is directly proportional to temperature. It means on heating, value of Kw increases. pH of neutral water is equal to 7 at room temperature. At room temperature, pH of neutral water is taken as 7. On the basis of this 7 number, we have pH scale. Water is an excellent solvent. Next property we have is it is an excellent solvent. बेटा we can't say chemical properties खत्म हो गई हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि नटशेल में समझ आया कि वाटर काफी रिएक्टिव केमिकल था और वो सबके साथ ही रिएक्ट कर रहा है. ठीक है, और बाकी की रिएक्शन जब आप करते जाओगे, जैसे जैसे एस ब्लॉक पढ़ोगे, पी ब्लॉक पढ़ोगे, यू विल फाइंड दैट कि how water is reacting with various elements, but maximum reactions of water are shown by alkali metals and alkaline earth metals. अब जब आप कहते हो excellent solvent, तो इसका रीजन है because of polarity, क्योंकि वो पोलर है. हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसके पास. कितना था? 81. हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की कैपेसिटी है. मेल्टिंग पॉइंट टू बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर रेंज इज वेरी लॉन्ग, यानी इसको काफी देर तक आप लिक्विड रख सकते हो. 0 to 100 डिग्री की रेंज है आपके पास, जिसमें ये लिक्विड रहेगा. यानी आप किसी को 20 डिग्री पे नहीं घोल पाए तो आप 21 डिग्री, 22, 23, 24, 25, 100 तक हीट कर सकते हो उसको घोलने के लिए. और मान लो कोई 80 डिग्री पे नहीं डिसॉल्व हो रहा और ठंडा करने पे घुलेगा, तो आपके पास एक रेंज है. यू कैन मूव फ्रॉम 80 to 70, 70 to 60, यानी किसी ना किसी टेम्परेचर पे आप इसे डिसॉल्व कर ही सकते हो. यानी आपके पास एक अच्छी खासी टेम्परेचर रेंज है जिसमें आप किसी भी सॉल्वेंट को यूज कर सकते हो. जितनी ज्यादा ये रेंज होती है, सॉल्वेंट की एप्लीकेबिलिटी उतनी बढ़ जाती है.
तो वाटर इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट क्योंकि उसके पास बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं. सबसे पहली प्रॉपर्टी है पोलैरिटी. देन वी हैव हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, melting and boiling point temperature range is very large, 0 to 100 degrees Celsius. Now can you imagine that water can dissolve? तो आप कहते हो ionic compounds are soluble in water. तो ये आपने क्या था? Ionic compounds are soluble in polar solvent. तो soluble in water. तो why ionic compounds are soluble in water? तो reason कौन है? Hydration energy. The reason for the solubility of ionic compound is hydration energy that is there, which is responsible for solubility. But a hydration energy, if is greater than lattice energy, तो compound पानी में घुल जाएगा. ठीक है. लेकिन अब हमारे पास मान लेते मैंने लिथियम फ्लोराइड का एग्जाम्पल लिया, ये एक्सेप्शन बन जाएगा. या मैंने लिखा कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी आयनिक कंपाउंड है. बेरियम सल्फेट, AgCl, AgBr, AgI, etc. are not soluble in water. जब ये पानी में नहीं घुल पा रहे तो उसका रीजन क्या होगा? बिकॉज their lattice energy is much more than hydration energy. इन केसेस में lattice energy की वैल्यू hydration energy से बहुत ज्यादा हो जाएगी. ठीक है. YLIF although it is ionic compound, बेटा लिथियम फ्लोराइड एक ionic compound है, लेकिन ये कंपाउंड पानी में नहीं घुलता. तो हम ये कहेंगे क्यों नहीं घुल पा रहा? तो उसका रीजन होगा इसकी lattice energy. So its lattice energy is very large, therefore it's not going to be soluble in water. Clear? Some organic compounds are soluble in water, जबकि organic compound को पानी में नहीं घुलना चाहिए था. तो organic compounds are soluble. Whenever we say organic compounds are soluble in water, the responsible force is hydrogen bonding. Because of possibility of hydrogen bonding. फॉर एग्जाम्पल आप सबको पता है इथेनॉल, उसमें OH ग्रुप है, soluble in water. तो नेचुरल है it is soluble in water because of hydrogen bonding. Acetic acid is soluble in water because of hydrogen bonding. Then you can have C6H12O6. Glucose is soluble in water. Then sugar, sucrose is soluble in water, C12H22O11. All these are soluble in water. Responsible force is hydrogen bonding. This is all about in general that must be known to you. तो आपको वाटर की जो केमिकल रिएक्शंस, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल जनरल प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए. अब तक वही सब है. यानी बाय द एंड ऑफ +1 you must be aware of water and its various properties. हेलो, जो आज हमने अभी किया इसमें से 60% टॉपिक आप पहले से कर चुके थे. सिर्फ हमने एक सम अप किया, यानी सारी चीजों को एक साथ इकट्ठा कर दिया कि वाटर इज यूजफुल, इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस. नाउ वी मूव ऑन टू हार्डनेस इन वाटर. When we talk about water, we are coming in contact with
various factors like water can form leather with soap. तो हम हाथ धोने के लिए जब पानी का इस्तेमाल करते हैं तो बेसिकली हम पानी का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि साबुन पानी में घुल जाता है. सोच के देखो, अगर साबुन पानी में ना घुलता होता तो हमें हाथ किसी और चीज से धोने पड़ते हैं, राइट? तो अब हमें वाटर की उस क्लींजिंग प्रॉपर्टी के ऊपर काम करना है कि वाटर को जो क्लींजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, हाउ इट इज एक्टिंग एज अ क्लींजिंग एजेंट. But water can be classified into two parts. One is called soft water and another is called hard water. When we talk about soft water and hard water, the soft water is a water which can form leather with soap easily. Hard water can't form leather with soap effectively. यानी यहाँ लेदर फॉर्मेशन की टेंडेंसी थोड़ी कम हो जाती है, छाग उतनी अच्छी तरह से नहीं बन पाती, तो हम कहते हैं इट इज हार्ड वाटर. Soft water can form leather because soap is sodium salt. When we add it to water, we get RCOO negative plus Na positive plus OH negative and H positive. Now this ion formed is having a long tail of carbon chain and head of COO negative, which is soluble now. और अब ये soluble state में micellar formation करेगा. And this micellar formation is must for cleansing. तो बेटा सोप पानी में घुल जाएगा, सॉल्युबल है, इसलिए एक टेल और एक हेड वाला पोर्शन अलग हो जाएगा. यानी वी कैन हैव टेल एंड हेड एंड आयंस आर सॉल्युबलाइज्ड. सोडियम आयन इज देयर इन वाटर नाउ. तो अब आपके पास ये जो टेल और हेड का कॉम्बिनेशन बना, इससे माइसिले बने. और माइसिल्स क्या होते हैं? मिसल फॉर्मेशन इज बेसिकली एसोसिएशन ऑफ soap molecule to form a cluster or group. The polar heads are outwards and tails are inwards. तो आपका सॉफ्ट वाटर क्या कर रहा था? सॉफ्ट वाटर पानी में यानी अपने अंदर उस सोप को डिसॉल्व कर रहा था और क्या बन जाता था? soluble soap, tail and head, and this is leading to micelle formation. This micellar formation is leading to the cleansing action. आप सोचते हैं हार्ड वाटर में ऐसा क्या हुआ? हार्ड वाटर contain calcium ions
and magnesium ions. अब जब सोप आपने डिसॉल्व किया तो RCOONA, that is soap, calcium ions are present over there, and calcium ions are having more tendency to form salt as compared to sodium ion. तो सोप के मॉलिक्यूल्स कैल्शियम के साथ रिएक्ट करने लग जाते हैं, और ये जो कैल्शियम सॉल्ट बना है, this is not soluble, it is insoluble, therefore no micellar formation. तो अंडरस्टूड है बेटा, आपके पास सोप जो आपने डाला था कि झाग बनेगी, माइसेलिस बनेंगे, अब कैल्शियम सॉल्ट तो पानी में घुले ही नहीं, और जब वो घुले ही नहीं तो झाग बनने के कोई चांस ही नहीं थे, तो अल्टीमेटली देयर विल बी नो क्लींजिंग एक्शन, स्कमी सा चिपचिपा सा सॉल्यूशन सा बन जाएगा. दैट्स व्हाई वी कैन से कि हार्ड वाटर डू नॉट फॉर्म लेदर. यानी अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाई हार्ड फॉर्म वाटर कैन नॉट फॉर्म लेदर विद सोप, तो आपको कैल्शियम या मैग्नीशियम के साथ ये रिएक्शन एक्सप्लेन करनी है. सेम रिएक्शन यू कैन गिव विद मैग्नीशियम आल्सो. RCOONA is soap. This is soap molecule. You can react it with magnesium also and you can complete the reaction. Magnesium 2 positive. We get RCOO whole twice magnesium. Beta valency of magnesium is 2. And this is now insoluble compound. It means it is a great problem. अगर पानी में हार्डनेस है तो उसका क्लिंजिंग एक्शन खत्म होने लगा, राइट? तो नाउ क्वेश्चन राइजेस, हार्डनेस क्यों होती है? हार्ड वाटर ये नहीं लिखा ना कि इट इज वेरी हार्ड लाइक स्टोन. बच्चों को आदत होती है ना एक सिंपल सी स्टेटमेंट देखिए, अच्छा ये सॉफ्ट वाटर मीन्स वेरी सॉफ्ट लाइक कॉटन, and hard water is very hard like stone. This is not the answer. Hardness means leather formation tendency is less. ऐसा कोई नहीं दिखता. Hardness. Now hardness can be of two types. Now topic is hardness. बेटा हार्ड वाटर के नुकसान ये हैं कि एक तो हमारे पास लॉन्ड्री इंडस्ट्री, इस सब में हार्ड वाटर से नुकसान ही होगा कि सोप आपका वेस्ट हो जाएगा. सेकेंड नुकसान हमारे पास ये है कि जब हम किसी बॉयलर में स्टीम बनाने की कोशिश करते हैं तो फॉर स्टीम फॉर्मेशन वी शुड हैव सॉफ्ट वाटर विद अस. हार्ड वाटर को जब आप बॉयलर में डालते हो तो हार्ड वाटर बॉयल होने पर एक स्कम क्रिएट करता है सरफेस के ऊपर, जिसकी वजह से बॉयलर खराब हो जाता है. इट मीन्स बॉयलर्स, जिन इंडस्ट्रीज में बॉयलर्स में पानी को बॉयल करके उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया स्टीम क्रिएट करनी है और स्टीम्स को आगे यूज करना है, तो स्टीम का यूज करने के लिए स्टीम बनानी पड़ेगी. तो बॉयलर के अंदर आप हार्ड वाटर नहीं यूज कर सकते क्योंकि बॉयलर खराब हो जाएगा, उसकी कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा है एंड वी कांट अफोर्ड टू गेट द स्पॉइल्ड बॉयलर. ठीक है जी. तो अब हार्डनेस को रिमूव करना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे पहले पता होना चाहिए हार्डनेस है क्या. तो हार्डनेस इज ऑफ टू टाइप्स. वन इज कॉल्ड टेम्पररी हार्डनेस, अनदर इज कॉल्ड परमानेंट हार्डनेस. तो वी हैव टेम्पररी एंड परमानेंट हार्डनेस विद अस. दो तरह की हार्डनेस है. Temporary hardness is because of calcium and magnesium bicarbonates. That means calcium bicarbonate, formula you must know, and magnesium bicarbonate, these two are going to cause temporary hardness. It is called temporary because its removal is easy.
And permanent hardness is calcium and magnesium ions, chlorides and sulfates. यानी cations are same but anions are going to be different. यानी आप कह सकते हो परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम सल्फेट. And point to be noted here, but these are called causing a hardness, temporary or permanent. इसका मतलब ये पानी में घुल जाते होंगे ना. All these are soluble salts. यानी अगर आपसे पूछा जाए what is the nature of calcium sulfate, it is water soluble. Magnesium sulfate is water soluble. Magnesium chloride, calcium bicarbonate, magnesium bicarbonate, all these are water soluble salts. ठीक है, जो चीज soluble है वही पानी में जाके हार्डनेस क्रिएट कर सकता है. तो water soluble salts are calcium bicarbonate, magnesium bicarbonate, chlorides and sulfates. These are causing hardness. टेम्पररी हार्डनेस को रिमूव करना आसान है, इसलिए इसका नाम टेम्पररी हार्डनेस है, इजी टू रिमूव. और परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए वी हैव स्पेशल टेक्निक, सम केमिकल्स आर टू बी यूज्ड एंड thus difficult to remove this permanent hardness. Now temporary hardness can be removed easily by temporary hardness can be easily removed by boiling and Clark's process. The two methods those are used to remove temporary hardness, boiling and Clark's process. Now first on boiling what will happen? टेम्पररी हार्डनेस रिमूवल बाय बॉइलिंग. बेटे जब आप बॉइलिंग करोगे तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट हीट होने पर बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. एंड दिस कैल्शियम कार्बोनेट इज अ प्रेसिपिटेट. इट विल सेटल डाउन. It means calcium bicarbonate is going to settle down. तो आपके पास जो हार्डनेस थी वो रिमूव हो गई. सेम वे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, on heating we get magnesium carbonate plus water plus carbon dioxide. This carbonate again when it is present in water we get magnesium hydroxide. It means now we can write it as magnesium hydroxide is formed. This magnesium hydroxide is precipitate. मैग्नीशियम कार्बोनेट सॉल्युबल है. डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स क्या कर जाती है? डिक्रीज. तो पहले दो कार्बोनेट्स काफी हद तक घुल जाते हैं, यानी बेरिलियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट काफी सॉल्युबल है. लेकिन जब हाइड्रोक्साइड्स की बात करते हैं तो सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या करती है? इंक्रीज. तो हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मैग्नीशियम आर नॉट सॉल्युबल, तो ये प्रेसिपिटेट कर जाता है. यानी यहां पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड, वाटर के साथ रिएक्शन हो ही रहा है, तो we get formation of precipitates of these two. Ultimately hard chemical calcium and magnesium are removed. Same way Clark's process is addition of calcium hydroxide. Clark's process में हम क्या करेंगे? We will add slaked lime. Addition of calcium hydroxide to water.
तो आपके पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट react with calcium hydroxide, we get formation of calcium carbonate plus water plus CO2. Carbonate plus water, CO2 limited. कैल्शियम कार्बोनेट बैलेंस कर लेंगे, 2 कैल्शियम कार्बोनेट and 2 water. Same way, magnesium bicarbonate react with calcium hydroxide, we get calcium carbonate, magnesium hydroxide. Plus water. Right? It means addition of calcium hydroxide can remove hardness. Magnesium beta hydroxides की form में remove हो रहा है. And we finally get removal of temporary hardness by using either boiling or by having calcium hydroxide. बेटे जब कुएं का पानी थोड़ा हार्ड हो जाए तो गांव वाले उसमें चूना डाल देते हैं. दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं, स्लेट लाइम. जब वो कैल्शियम ऑक्साइड डालेंगे तो अपने आप ही कैल्शियम क्विक लाइम इज रिएक्टिंग विद वाटर टू गिव अस स्लेट लाइम. तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? स्लेट लाइम है. तो आपने स्लेट लाइम डाल दिया या आपने क्या कर दिया? क्विक लाइम डाला जो कि पानी से रिएक्ट करके स्लेट लाइम बन गया. तो फाइनली आपने कुएं के पानी की हार्डनेस यानी टेम्पररी हार्डनेस रिमूव कर दी. राइट? तो टेम्पररी हार्डनेस कैन बी इजीली रिमूव्ड, देयरफॉर इट इज नेम्ड एज टेम्पररी hardness. That is all about temporary hardness and its removal. Now we'll do removal of permanent hardness. अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे removal of permanent hardness. Removal of permanent hardness. Four methods are there. First is washing soda method. Second is permuted method. Third is Calgon's process. And fourth is named as ion exchange resins. The permanent hardness can be removed by 4 methods. Formula of washing soda you must know, sodium carbonate dot 10H2O. Permuted method में आप यूज करोगे Na2Al2Si2O8 dot XH2O, which is also called zeolite. The permuted method is the use of zeolite technique. Calgon's process में the chemical used is sodium hexametaphosphate. Sodium hexametaphosphate. Sodium hexametaphosphate. Na6PO3 whole 6. PO3 होता है मेटाफॉस्फेट. Metaphase phosphate ion is PO3 1 negative. And it is sodium hexametaphosphate, means 6 sodium, 6 metaphosphate together. And ion exchange resins are of 2 types. One is cation exchangers
and another is anion exchanges. यानी बेसिकली व्हेन वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हमें बेसिक फॉर्मूलाज पता होने चाहिए कि जियोलाइट में क्या यूज किया था, कैल्डन्स प्रोसेस में विच केमिकल वी हैव यूज्ड, व्हाट इज सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, वॉशिंग सोडा एंड वाटर ऑफ हाइड्रेशन कितना है, दिस वी मस्ट नो. First we have washing soda technique. The method which is going to use washing soda. In this case बेटा आपके पास washing soda तो सेम ही है, सिर्फ हार्डनेस डिफरेंट है. अगर कैल्शियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड, इट कैन बी कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट. दिस इज परमानेंट हार्डनेस. When we add sodium carbonate to it, washing soda is added, तो रिएक्शन विल टेक प्लेस और आपके पास क्या बन जाएगा, देखो इधर कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड प्लस NaCl इज देयर. ये समझ आया? अब कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट कर जाएगा. अगर आपको याद हो बॉइलिंग वाटर, जब पानी को बॉइल करते हैं तो नीचे व्हाइट व्हाइट पाउडर बन जाता है. दैट व्हाइट पाउडर एट द बॉटम ऑफ योर पैन इज गोइंग टू बी कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट, क्योंकि टेम्पररी हार्डनेस रिमूव हो रही थी. अब ऐसे ही ये कैल्शियम कार्बोनेट तो नीचे सेटल हो गया. अब पानी में कौन सा सॉल्ट आ गया, NaCl. इट मीन्स पानी में से आयंस रिमूव नहीं हुए, लेकिन पानी में से हार्डनेस कॉज करने वाले आयंस रिमूव हो गए. NaCl is not causing any hardness, therefore with NaCl we don't have any problem. यानी वॉशिंग की प्रॉब्लम कैल्शियम से है, ना कि सोडियम से. तो आपने कंप्लीट रिमूवल ऑफ आयंस नहीं किया, आपने सिर्फ कौन से आयंस को रिमूव किया, कैल्शियम को. आप सिर्फ केटाइन को रिमूव कर रहे हो, एनाइन तो पानी में एज सच पड़ा ही हुआ है. ये समझ आया? यानी जब आपने वॉशिंग सोडा डाला तो क्लोराइड आयन जो पानी में था वो वैसे ही रहा, सिर्फ कैल्शियम आयन कैल्शियम कार्बोनेट बनके नीचे सेटल हो गया. कैन यू कंप्लीट रेस्ट ऑफ द रिएक्शंस? अब आपके पास यहां पे आपने बनाया मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस सोडियम क्लोराइड. मैग्नीशियम कार्बोनेट फर्दर पार्शली सा सॉल्युबल होता है, ये फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में, और ये क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट. Magnesium carbonate is partially soluble salt, therefore to remove it fully it will automatically react with water to give us magnesium hydroxide, water and carbon dioxide, and we get magnesium hydroxide precipitated out. डायरेक्टली MgOH लिख देते हैं.
कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बनाया उसमें सोडियम सल्फेट करेंगे ना. Here we get calcium carbonate plus sodium sulfate. Again, sodium sulfate is not causing any hardness. Now again, magnesium carbonate plus sodium sulfate. Again, magnesium carbonate is going to dissolve to give us magnesium hydroxide, which is precipitated out. The removal of permanent hardness by washing soda is possible. यहाँ पे एक पॉइंट नोट करेंगे. इफ टेम्पररी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस इज फाउंड टुगेदर, अगर दोनों एक साथ प्रेजेंट हो, if temporary hardness and permanent hardness are found together, then caustic soda is added to remove hardness. Then caustic soda is added to remove hardness. What is caustic soda? NaOH. तो बेटा अगर आपके पास टेम्पररी और परमानेंट हार्डनेस दोनों एक साथ है, तो हम कास्टिक सोडा ऐड कर सकते हैं. कास्टिक सोडा से क्या बन जाएगा, देखो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा. प्लस सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर. तो कैल्शियम कार्बोनेट इज रिमूव्ड. ठीक है, और यहां पे क्या बन जाएगा, वी गेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस 2NaCl. अब आपने इसमें क्या डाला हुआ था, सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा. जब आप वॉशिंग सोडा ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट ऑन NaOH. तो अंडरस्टूड है, यहाँ पे आपका काम और आसान हो गया. अब NaOH फिर से बन गया. This NaOH can remove further the hardness caused by temporary bicarbonates. तो आप थोड़ा सा कास्टिक सोडा साथ में ऐड कर देते हो विद वॉशिंग सोडा. यानी कि दोनों हार्डनेस एक साथ प्रेजेंट हो तो वॉशिंग सोडा में थोड़ा सा क्या डाल देंगे, कास्टिक सोडा. ठीक है, क्योंकि कास्टिक सोडा अपना काम करता रहेगा और वॉशिंग सोडा अपना काम करता रहेगा. Next method we have is permuted method. Second method is permuted method. परमिटेड वर्ड है आर्टिफिशियल जियोलाइट. परमिटेड इज आर्टिफिशियल zeolite. Zeolite is a special porous chemical which is used as a catalyst or which is used as a special porous compound with a specific pore size to remove some hard material या calcium ions. ठीक है बेटा, समझ आ गया? ढाई बजे थी.